Okay, my screen is visible to everybody. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. Okay. So the equation is of the type dny upon dxn plus a1 dn minus 1 y upon dxn minus 1 plus a2 dn minus 2 y upon dxn minus 2 plus so on plus an Ma'am, minus 1. Yes. still I'm not visible what you are writing. No visible, ma'am. It is visible, ma'am. Yes, ma'am. Not visible. Visible, ma'am. Ma'am, not. अब हो गया. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो आधे लोगों को विजिबल है, आधे को नहीं विजिबल है, तो कैसे माने हम? Yes, ma'am. Visible. Ma'am, visible है. Visible, ma'am. Plus a and y is equal to capital X. ठीक. So now this type of equation is called linear differential equation with constant coefficients, because these are linear terms. The differential, the derivatives are linear terms, and they are multiplied by constant coefficient. These a1, a2, an minus 1, an, these are constants. Now there are two types of equations. One is homogeneous and the other is non-homogeneous. For homogeneous, this x function, this is equal to 0. Okay? So for homogeneous function, this. Now this left hand side, this we can write it as, if you write capital D as d by dx, then this left hand side, this is a function of capital D. Into y, this is equal to 0. And for non-homogeneous, function, the equation is fd into y, this is equal to capital X. This capital X, this is a function of x. Some function of x. Now for homogeneous function, for homogeneous equation, the solution is y is equal to complementary function. SCF is complementary function. And for non-homogeneous, the solution is y is equal to complementary function plus particular integral. Okay. Now, how to find out all these complementary function and particular integral? Next, we are going to study this. So, write rules for finding complementary function. This is complementary function.
Now what do? We first find the auxiliary equation of this. Now if suppose if the for complementary function we put fd into y, this is equal to 0. Take. Now put d is equal to m here. Put d is equal to m. So our equation will become fm into y is equal to 0, and solve this equation to find the roots of m. Now solve to get values या roots of the above equation. ठीक. Now if all these roots come to be distinct, so write if roots are distinct and real, suppose these are m1, m2 and mn. These are the roots of this equation fm. सबको नहीं विजिबल है? Visible. मैम विजिबल है। तो जिसको नहीं विजिबल है वो एक बार अपना फिर से लीव करके ज्वाइन करो तो शायद विजिबल हो जाए. So now complementary function will be c1 e raised to the power of m1x plus c2 e raised to the power of m2x plus so on plus cn e raised to the power of mnx. ठीक, अभी फॉर्मूला लिखो, अभी जस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा. Now second, if any two roots are equal. So if roots are equal, say m1 और m2 इक्वल है एंड बाकी सब डिस्टिंक्ट है, इस टाइप के है, तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा? दिस विल बी c1 प्लस c2x into e raised to the power of m1x plus c3 e raised to the power of m3x, बाकी वैसे ही चलेगा and so on plus cn e raised to the power of mnx. ठीक. सिमिलरली इसमें अगर मान लो c1 c2 m1 m2 और m3 इक्वल हो गए तब क्या होगा? c1 plus c2x plus c3x square. So if m1 m2 m3 इक्वल हो गए और रेस्ट जो है वो mn तक है, m4 m5, सो ऐसे केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा? c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर ऑफ m1x प्लस बाकी वैसे ही चलेगा c4 e raised to the power of m4x plus so on plus cn e raised to the power of mnx. ठीक. Now third is if roots are complex conjugate. Complex roots always occur in conjugate form. Complex conjugate, that is n Real is equal to a plus ib, real coefficients, and m2 is equal to m1 is this and m2 is a minus ib. Then in this case complementary function will be e raised to the power of ax c1 cos bx plus c2 sin bx. So first let us do some questions on complementary function, that is on homogeneous functions. Suppose this is the question: y triple dash
4y triple dash plus 4y double dash plus y dash is equal to 0. So function equation क्या है? 4d3 plus 4d square plus d y is equal to 0. Now this is fd into y is equal to 0. Now the auxiliary equation will be, auxiliary equation is 4m cube plus 4m square plus m is equal to 0. Now find out the values of m from here. M को solve करो. M will come out to be 0, minus half, minus half. ये बनेगा ना? M into 2m plus 1 का whole square is equal to 0. So complementary function क्या हो गया? Now this is a homogeneous equation, so the solution will be complementary function. This will be c1. Now this is 0, e raised to the power of 0x plus these two roots are equal, so c2 plus c3x e raised to the power of minus half x. So this is c1 plus c2 plus c3x e raised to the power of minus x by 2. This is the solution of this question. Clear everybody? दूसरा Ma'am. क्वेश्चन देखें. हाँ, These are distinct Hello, ma'am. real constants. डिस्टिंक्ट ही तो है. दो इक्वल है, 0 और दो रूट्स इक्वल है, माइनस हाफ. तो जो दो इक्वल है उनके लिए c2 plus c3x कर दिया है. जो डिस्टिंक्ट है उसके लिए c1 into e raised to the power of 0 into x. Yes, ma'am, but the C1, C2, C3, these are all distinct real constants. We don't know their हाँ, value. these are distinct real constant. These may come equal depending upon the initial conditions or boundary conditions given to you in the question, in your question. These may be distinct or these may be equal. Nothing is clear. ठीक? It all depends upon this your question. जो कि आपसे नहीं पूछा जाता है. इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालना नहीं पूछा जाता है. मोस्टली अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो बात अलग है. Okay, ma'am. Now second question is d cube plus 1 y is equal to 0. Now find the auxiliary equation. Auxiliary equation will be n cube plus 1 is equal to 0. So this may be written as m plus 1 and m square minus m plus 1 is equal to 0. So find out the values of m. M will be minus 1 and m will be 1 plus minus 1 minus 4 upon 2. So this will be 1 plus minus under root 3i upon 2, complex root. So y will be c1 e raised to the power of minus x plus, now here a की value is half, so e raised to the power of x by 2 और अंदर बचा c1 cos b की value is root 3 by 2 x plus c2, c1 यहाँ हो चुका है तो उसको c2 लिख दो, c2 and c3 sin root 3 by 2 x. This is the solution. क्लियर है?
एक और क्वेश्चन कर लो, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल्स कैसे निकालते हैं वो देखा जाए. So now 9 d square y plus 12 dy plus 4y is equal to 0. So we can write this as 9d square plus 12d plus 4y is equal to 0. Now homogeneous, so find the auxiliary equation. Auxiliary equation is 9m square plus 12m plus 4 is equal to 0. So this is 3m plus 2 का whole square. So m is equal to minus 2 by 3. So y is equal to c1 plus c2x e raised to the power of minus 2x by 3. Clear? Now Yes, for ma'am. non-homogeneous functions, rules for finding particular integral. हम लोग pi लिखेंगे. Now equation is of the type fd into y is equal to capital X, where capital X is a function of x. This is a function of small x. So particular integral is 1 upon fd operated on capital X. Now first rule is if capital F is an exponential function, then in such case 1 upon fd e raised to the power of ax, this is the particular integral. This will be 1 upon, in place of d you write a, fa e raised to the power of ax. Now second rule is one upon f of d square sine ax plus b. Now here you can write f of d in terms of f of d square. If you can write it like this, then you can operate it on sine ax plus b. Otherwise it cannot be operated. तो वो कैसे होगा अभी आप लोग देखेंगे क्वेश्चंस में. दैट इज जो आपका एफ डी दिया हो वो कुछ इस फॉर्म में दिया हो कि वो फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर बन रहा हो. ठीक, वो डी उसमें ईच टर्म जो है वो डी स्क्वायर के में या डी स्क्वायर की पावर में लिखा गया हो. सो देन यू कैन राइट इट एफ डी इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ डी स्क्वायर. ठीक, सो दिस is equal to 1 upon f of minus a square sine ax plus b, provided this denominator is not equal to 0. Provided f of minus a square, this is not equal to 0, and this denominator is not equal to 0. This also applies to the first rule also. This fa should not be equal to 0.
Otherwise, how can you apply the formula? And similarly, it is applicable on cos also. Cos of ax plus b, this is equal to 1 upon f of minus a square cos ax plus b, provided f of minus a square, this is not equal to 0. Now what happens if this f of minus a square, this is equal to 0? So if f of minus a square, this is equal to 0, then what you do, you write 1 upon f d square sin ax plus b जो आपके पास था, this is equal to x into 1 upon f dash of minus a square sin ax plus b. ठीक, एक x मल्टीप्लाइड हो गया और ये डैश हो गया. अगेन प्रोवाइडेड दिस डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. If f dash of minus a square, this is not equal to 0. Now, if it is equal to 0, you again differentiate this. So, if f of minus, both of these values are equal to 0, f of minus a square ये भी 0 है और f dash of minus a square ये भी 0 है. So, उस केस में ये जो वैल्यू आपकी होगी, राइट हैंड साइड वाली लिखना, दिस विल बी इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड वाली, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ माइनस एफ डबल डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी. ठीक, अगेन प्रोवाइडेड दिस डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. अगर ये फिर से 0 हो गया तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे. तो अगर ऐसे डिफरेंशिएट करते चले जाओगे तो लास्ट में आपको एक कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा, दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0. ठीक, अगर ये 0 होता गया डिनोमिनेटर तो. ठीक, इफ f डबल डैश ऑफ माइनस a स्क्वायर, if this is not equal to 0. मैम इसमें मैम x की पावर बढ़ती जाएगी फिर जब तक. हाँ, x की पावर बढ़ती जाएगी और यहाँ डिफरेंशिएशन की भी पावर बढ़ती जाएगी. और लास्ट में अगर डिफरेंशिएट करते जाओगे तो लास्ट में कांस्टेंट टर्म पे ही जाके रुकोगे, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर हर बार 0 हो रहा है तो. अगर नहीं 0 हो रहा है तो वहीं पे रुक जाओगे. ठीक, सिमिलरली सेम फॉर्मूला अप्लाइज फॉर cos values also. F d square of cos ax plus b, similarly cos ax plus b, ये भी x into 1 upon f dash of minus a square cos ax plus b, if f dash of minus a square, this is not equal to 0, so on. मीन्स इसमें भी वही देखते जाओगे, डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो एक और डिफरेंशिएट कर दोगे. सो इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन, d square minus 3d plus 2 into y is equal to e raised to the power of 3x. Now, this is a homogeneous equation. The solution will be complementary function plus particular integral. So, first you find the complementary function. For complementary function, you put d is equal to m cube minus 3m, m square minus 3m plus 2 is equal to 0. ठीक, so what are the values of m? जल्दी बताओ m की क्या वैल्यूज आएंगी? -1 -2 -1 2 1 की -1 -1 2 1
1, 1 और 2 आएगा। 1,2 पॉजिटिव होंगे मैम। 1,2 1,2 में ये यहाँ पे माइनस कैसे आ गया? मैम सिर्फ 1 और 2 आएगा। +1 +2 +1 +2 चलो ठीक है, तो यही बांध दिया। और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1/fd इज दिस d square minus 3d plus 2. This is fd and e raised to the power of 3x. Now by our formula, this will be equal to, put d is equal to a. A is 3 here. So 1/3 square minus 3 into 3 plus 2 e raised to the power of 3x. So this will be half e raised to the power of 3x. So final solution will be complementary function plus particular integral. Now what is complementary function? This is c1 e raised to the power of x plus c2 e raised to the power of 2x plus half e raised to the power of 3x. This is particular integral. Clear everybody? Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन करो इसी पे। d square minus 2d plus 1 into y is equal to 1 minus e raised to the power of minus x की पावर 2. So complementary function के लिए auxiliary equation m square minus 2m plus 1 is equal to 0. So ये m minus 1 का whole square बन रहा है. So m will be 1 1. And particular integral के लिए 1/d square minus 2d plus 1 of 1 minus e raised to the power of minus x whole square. ठीक, तो इसको खोल लेते हैं पूरा. So this is equal to 1/d square minus 2d plus 1 और ये बचा 1 minus 2 e raised to the power of minus x plus e raised to the power of minus 2x. Now 1 you can write it as e raised to the power of 0 into x. अब इस पे अलग अलग ऑपरेट करो. So this will be, पहले इस fd को इस पे e raised to the power of 0 into x पे ऑपरेट किया. ठीक, तो हमारा क्या बना 1/0 square minus 2 into 0 plus 1 into e raised to the power of 0 into x minus 2 times. अब ये वाला e raised to the power of minus 1x. Here a is equal to minus 1. So 1/- 1 का whole square minus 2 into minus 1 plus 1 e raised to the power of minus x. Now ये वाला e raised to the power of minus 2x. So this will be plus 1/, here a is equal to minus 2. So minus 2 whole square minus 2 into minus 2 plus 1 e raised to the power of minus 2x. तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 minus half e raised to the power of minus x plus 1/9 e raised to the power of minus 2x. So final solution will be complementary function plus particular integral. Always write final solution is equal to complementary function plus particular integral, क्योंकि ये जो सेंटेंस होगा ये आपका हाफ मार्क्स का होता है. अगर तो फाइनल आंसर नहीं लिखते हो
तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. So this will be m is equal to 1 आया था यहाँ पे. So this will be c1 plus c2x e raised to the power of x plus 1 minus half e raised to the power of minus x plus 1 by 9 e raised to the power of minus 2x. एक और क्वेश्चन देख ले. d square plus 4 into y is equal to sin 3x plus e raised to the power of x. So कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के केस में ऑक्सिलरी इक्वेशन तो हुई m square plus 4 is equal to 0. So m is equal to plus minus 2y. And particular integral, this is equal to 1 upon d square plus 4 sin 3x plus 1 upon d square plus 4 e raised to the power of x. Now here you see that f of d is a function of f of d square also. All the terms in the f of d are either written in terms of d square or constant. So we can apply the sine formula. So here sin ax plus b में b की वैल्यू है 0 and a की वैल्यू है 3. So we have to put f of d square is equal to f of minus of a square. So this will be minus f1 upon minus 3 square plus 4 sin 3x plus, now here you put d is equal to 1 here because a is equal to 1 in e raised to the power of x. So this will be 1 square plus 4 e raised to the power of x. So हमें क्या मिला? Minus 1 upon 5 sin 3x plus e raised to the power of x upon 5. Now coming to rule number 3, particular integral का. If the function is of the type x to the power of n, that is a polynomial function, then what you do, you write fd, 1 upon fd is fd inverse x to the power of n. Now you arrange this fd in the form of 1 plus x की power n और 1 minus x की power n. Now 1 plus x की power n का binomial expansion we have 1 plus nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial x square plus so on. Similarly 1 minus x की power n का binomial expansion 1 minus nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial x square, then minus and so on. How we apply this we'll see in the question. So write a question on this. The question is d2y upon dx square minus y is equal to 2 plus 3x. Now this is a polynomial. So first you find the complementary function. For complementary function, the auxiliary equation is
m square minus 1 is equal to 0. So m will be 1 and minus 1. And for particular integral, this will be 1 upon d square minus 1, 2 plus 3x. Now we have to write d square minus 1 in the form of, now 2, this is a constant, so we have seen that we can write 2 as 2 into e raised to the power of 0 into x. ठीक, तो इसमें e raised to the power of x वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, you put d is equal to 0, so 1 upon 0 square minus 1 into 2. ये तो वैसे ही रहा. अब जो दूसरा वाला है, this here 3 is a constant, this will come outside, और d square f of d का inverse, so d square minus 1 का inverse into x, d square minus 1. हमें लिखना है इसे 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स के फॉर्म में. सो हम यहाँ से -1 कॉमन ले लें. तो यहाँ से अगर हमने -1 कॉमन लिया तो ये हमें मिला -2 -3 और अंदर बचा 1 माइनस डी स्क्वायर -1 पावर -1 x. Now expand this using binomial expansion. So we have -2 -3 अंदर बचा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी की पावर 4 ठीक. नाउ इसमें कितने टर्म्स लेने हैं, हाउ मेनी टर्म्स वी हैव टू टेक इन दिस. जितने एग्जिस्ट करें आपके पॉलिनोमियल पे अप्लाई करने के बाद, जैसे व्हेन यू अप्लाई 1 ऑन x यू गेट 1, -2 -3x ये मिला. एंड देन सेकेंड टर्म डी स्क्वायर को x पे अप्लाई करोगे यू गेट 0. दिस इज d2x अपॉन dx स्क्वायर, दिस विल बी 0. देन अगेन d4 को x पे अप्लाई करोगे वो भी 0. एंड हायर पावर्स बढ़ती जाएंगी तो ये सारे टर्म्स हमें 0 मिलेंगे. तो लास्ट में हमें बस खाली ये कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पे मिला, बिकॉज आवर पावर फॉर ऑन x इज ओनली 1. ठीक. So how many terms on the expansion you take, this depends upon the function on which you are applying this expansion. So here the particular integral you are getting -2 -3x. So final answer is complementary function plus particular integral. This will be c1 e raised to the power of x plus c2 e raised to the power of -x -2 -3x. This is the final answer. एक और क्वेश्चन करो इसमें जो थोड़ा सा बड़ा हो एक्सपेंशन करने पे. क्लियर हो रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, कितने टर्म्स लेंगे वो. उतने ही टर्म्स लोगे जितने पे आपको नॉन जीरो वैल्यूज मिले. ठीक. तो जैसे अब इस पूरे ये दिस इज एन ऑपरेटर, सो दिस ये वाला जो है ये पूरा क्या है, ये दिस इज एन ऑपरेटर.
and you have to apply this on this function. The function here is x. So when you apply 1 on x, you get x. When you apply d square on x, you get 0. When you apply d4 on x, you get 0, and so on. The powers on d will increase, so you get the 0 values. So the only non-zero value that you are getting from here is x. एक और क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा. d square plus 5d plus 4 into y is equal to x square plus 7x plus 9. Now complementary function, you find out and tell me the roots of auxiliary equation. M square plus 5m plus 4 is equal to 0. So what are the values of m? -4 -1 -1 -4. ठीक. Now particular integral 1 upon d square plus 5d plus 4 operated on x square plus 7x plus 9. Now we have to write it in the form 1 plus x या 1 minus x के form में लिखना है. So we can take 1 by 4 common from here. ये है हमारा. So we can write it. This is equal to, यहाँ से हमने 1 upon 4 कॉमन लिया. So अंदर बचा हमारा 1 plus d square plus 5d divided by 4 इसका inverse. This is in the denominator. लिख सकते हैं. ठीक. और this has to be operated on x square plus 7x plus 9. Now expand this using binomial expansion. So this will be 1 upon 4 और अंदर बचा 1 minus ये क्या है d square plus 5d by 4, 1 plus x, 1 plus nx. So n is -1 here. This plus -1 -2 -1 into -1 लिख दें पूरा. n into n -1 -1 divided by 2 factorial and इसका square d square plus 5d divided by 4 whole square plus so on, and this has to be operated on, यहाँ पे क्या आएगा x square plus 7x plus 9. So इसमें हमने कितने टर्म्स लिखे जितने पे, बिकॉज हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मैक्सिमम नॉन डिफरेंशिएबल नॉन जीरो टर्म आफ्टर डिफरेंशिएशन सेकेंड पावर तक आएगा, सेकेंड डिग्री तक आएगा. एक्स स्क्वायर है. सो मैक्सिमम आप डी स्क्वायर की वैल्यू पा सकते हो. उसके बाद सारी वैल्यू जीरो होंगी. डी क्यूब डी 4 ये सब जीरो होंगी. सो देयरफॉर हमने सेकेंड ऑर्डर तक लिखा है बिकॉज हमारे पास यहाँ 5d है जो डी स्क्वायर देगा. थर्ड वाली सब जीरो होने वाली है. सो देयरफॉर हमने सिर्फ 2 टर्म्स लिखे एक्सपेंशन के. ठीक. अब इसे कर डालो. तो ये क्या बचा 1/4. अब 1 को अप्लाई करो इसके ऊपर तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. ये तो यही बचा -1/4. अब ये वाला टर्म कर रहे हैं डी स्क्वायर प्लस 5d. सो डी स्क्वायर को अप्लाई करो पहले. क्या बचा एक्स स्क्वायर पे 2x प्लस 7. ये तो 0 हो जाएगा. डी स्क्वायर 2 बार करोगे ना. एक बार करा 7 बचा, दोबारा करा तो 0 हो गया. एंड सिमिलरली ये 2x हुआ और दोबारा किया तो 2 बचा. तो यहाँ पे बचा खाली 2. डी स्क्वायर को अप्लाई कर रहे हो
तो एक तो बचा खाली 2। ठीक, अब +5d को अप्लाई करो। सो 5d को किया तो हमें मिला 5 और अंदर बचा 2x + 7। ये ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से बना क्या -2 और ये हो गया 2 और 2/2 फैक्टोरियल हो गया 1। अब अंदर वाला टर्म देखो, अंदर वाले टर्म में प्लस ऊपर क्या बना हुआ है स्क्वायर। सो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, एक तो मिला d की पावर 4, d की पावर 4 जब आप इस पे अप्लाई करोगे x² + 7x + 9 पे तो दिस विल बिकम 0। सेकेंड मिला क्या, इसका स्क्वायर कर लो, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो हमें मिला d की पावर 4 प्लस 5 × 2 10 d³ प्लस 25d², ये मिला। तो d की पावर 4 एंड d³ ये दोनों तो व्हेन यू अप्लाई ऑन दिस पॉलिनोमियल दिस विल गिव 0। नाउ बचा क्या 25d²। 25d² जब आप अप्लाई करोगे इस पे तो हमें यहाँ से 2 मिलने वाला है x² से। d को 2 बार अप्लाई करोगे, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 मिलेगा। ये दोनों टर्म 7x और 9 वाले 0 हो जाएंगे। ठीक, तो हमें बचा 25/2/4 25/4 × 2 ये बचा। तो 4² होगा ना? हाँ 4² है तो 16 हो गया। सो 5/16 × 2 इतना बचा, और बाकी आगे के जो टर्म्स हैं वो सब 0 हो जाएंगे। क्लियर? सो y इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तुम्हारा क्या निकला था, क्या था -4 -1। सो c1 e⁻⁻4x प्लस c2 e⁻⁻x प्लस, अब ये वाला सॉल्व कर लो, जो भी सॉल्व करके आए उसको यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे फिर। असाइनमेंट इसीलिए हमने शेयर कर दिया है कि उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, तो साथ साथ करते रहोगे तो क्लियर होता रहेगा। मैम इस वीक में ये चैप्टर हो जाएगा? इस वीक में क्या, इस वीक में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला? मेरे ख्याल से इस वीक के अलावा हमें शायद 1 या 2 लेक्चर और चाहिए हो, तो वो आफ्टर होली देख लेंगे।